Hello students, I have already uploaded my first video regarding your development chapter where whatever we have completed in our regular classes and beside that something else I have explained and I recapitulate whatever we have completed in my first video, and beside that also through the WhatsApp I sent the question answer of this chapter, and I would like to see this question answer in your class notes after the reopening of the school. So I hope seriously you are following it and writing it in your class notes. Fine. Now only one small topic is left, that is sustainable development. Today I would like to complete that one. Clear? Now let's start the sustainable development. So the topic is sustainable development. In sustainable development, you know that what is the difference between economic development and the sustainable development? For the economic development, we are producing more. When we are producing more, our income level is increasing, and per capita availability of the goods and services, that is increasing, standard of living of the people are increasing, and we are thinking that we are getting developed. Every country wanted that thing, and they are using more and more natural resources, producing more, increasing their GDP, and as a result their economic development is taking place. But is that economic development a sustainable one? The scientists, they made the research and they are telling that the present whatever economics the present generations, whatever economic development they are doing, that is not sustainable one. And if it will not sustainable one, then it will degrade the environment and it will create different type of the natural disaster. If we want to control this natural disaster, our economic development must be sustainable one. What do you mean by sustainable development? Now, how can we achieve that one? याद रखना, तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब हम ये सोचें, ये जो अर्थ है, we should keep this thing in mind in such a way that we will always try to follow the sustainable development. How? Always will think that this earth we have not inherited from our forefather. हमको हमारे forefather से ये अर्थ हमको दान से मिला है, ये हम दिमाग में ना रखें कि कोई भी चीज़ दान से मिला है तो जैसा पारे वैसा यूज़ करो. तो अगर हम ये सोचेंगे कि वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, कोई भी चीज़ जब बोरो करते हो तो क्या करते हो, उधारी किसी से लेंगे तो क्या करेंगे, विथ इंटरेस्ट द प्रिंसिपल वी आर रिटर्निंग. मीन्स अगर हम ये सोचेंगे वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस लैंड फ्रॉम आवर फोरफादर, रादर दिस अर्थ इज बोरोड फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, then what we will do? Obviously, in a whatever an earth we are enjoying today, the earth in a better way we will be giving to our future generation. Fine. So ये चीज़ अगर दिमाग में रखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है. अगर ये हम दिमाग में रखेंगे कि हमको फोर फादर से दान से मिला है, हमको जैसा भी यूज़ करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. अगर हम ये सोचें कि ये हम हमारे फ्यूचर जनरेशन से बोरो करके लिए हैं, तो ओबियसली हम इस अर्थ को और बेटर वे में फ्यूचर जनरेशन को देंगे, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, लिटररी मीनिंग क्या है? Sustainable development means the development which take care of the needs of the present generation as well as the needs of the future generation without depleting the natural resources or without creating the pollution. मतलब वो डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन का नीड को भी केयर करेगा, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का नीड को भी केयर करेगा, और केयर करने के साथ साथ ना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करेगा, ना एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करेगा. समझ में आ गया? इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये जो हम इतनी सारी चीज़, इतना सारा डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि अमेरिका इतना बढ़ गया, इटली में इतना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, चीन का पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा है, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि खाली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है? Actually, the today's the development which we are taking, that is not sustainable. Why not sustainable? You just see, we wanted to produce more. When you wanted to produce more, what you are doing? We are using the resources, and these resources are two types. What are the resources? One is renewable resources, other is non-renewable resources. What is renewable resources? Renewable resources is that resource which is renewed again and again after the use, means recycle, regenerate again. What is the example of the renewable resources? The water, air,
your sunlight. These are the renewable resources. And non-renewable resources, which once used, it get exhausted. It is exhaustible resources, or it is called non-renewable resources. A renewable resources is also known as inexhaustible resources. So renewable resources में आता है अगर वाटर, एयर, सनलाइट, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? पेट्रोलियम, कोल, ये सब आ जाती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. एक बार हम यूज किए तो ये खत्म हो जाती है, इट इज एग्जिस्टेबल. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो ज़्यादातर करके ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको कंजम्पशन के वक्त बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होती है और एक बार यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करता है. लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम दोनों रिसोर्स को यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल ऑल्सो, नॉन रिन्यूएबल ऑल्सो. तो कैसे उसको यूज़ करेंगे कि हम यूज़ भी करें और सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो. जैसे मान लो वाटर, वाटर तो रिन्यूएबल है, अगेन एंड अगेन रीजनरेट होता है, तो हम जितना चाहे वाटर यूज़ करें क्या. जैसे हम HYB से लेके प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शंस के लिए, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट करता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अंडरग्राउंड वाटर. तो क्या जितना चाहे HYB से लेके जितना चाहे हम प्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं. ये सोच के कि वाटर तो रीजनरेट होता है अगेन एंड अगेन, तो यूज़ कर लेने से क्या होगा? नहीं. हमको वाटर उतना यूज़ करना चाहिए जितना, मतलब जितना जनरेट हो सकता है उससे कम यूज़ करना चाहिए. अगर 10% में रीजनरेट हो रहा है, हमको उससे कम, मतलब 8% हमको यूज़ करना चाहिए. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यूज़ करें 10%, रीजनरेट होता है 4%. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी, which can be again regenerate, still then we should be very cautious when you are using the renewable resources. How you will make the cautious? Means the rate of extraction of the renewable resources should be less than the rate of regeneration of the renewable resources. ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे, क्योंकि हमारा एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो जा रहा है than the regeneration, इसलिए ग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिप्लीट करता जा रहा है. फाइन. अच्छा, या जिसको बोलते हैं ओवर यूज, वी आर ओवरयूजिंग द ग्राउंड वाटर. So groundwater is an example of renewable resources, but these renewable resources replenished by the nature through the rain, but it is replenished less. Replenished means regenerate less than what we are extracting. That's why it is called overuse of the groundwater. So while you are using the groundwater, though it is renewable resources, but still then we should take certain measures to check it. Okay. Now, next one is, so the next one is the non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources which get exhausted after the use, मतलब खत्म हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम और कोल. Okay, so we should be very cautious while using the non-renewable resources, just to increase our GDP, just to produce more. If we will use more non-renewable resources, then it will create the threat for our future generation. It may not be available for our future generation. If one table has given in your book, if you'll see that generally you know that the petroleum product we cannot in India, we don't have the capacity to, we don't have the petroleum, so we are importing the petroleum, and generally whole the world is importing the petroleum from the Middle East country and the United States of the America. Okay, and if you'll say this table, you will see that within the whole world, including the Middle East and the United States of America, 137 billion tons of the petroleum is existed, which is only run for the 43 years. This is the old data. Maybe in the new data book you will find lesser than the 43 years. This petroleum will remain for our future generation. तो इसका मतलब कंट्री में 137 बिलियन टन्स ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व है, जो सिर्फ 43 इयर्स तक रह सकता है, जिस हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद क्या होगा तुम सोच सकते हो?
Do you think that the way we are using the means running the motor vehicles productions, we are carrying through using the petroleums, फ्लाइट में जा रहे हैं, थोड़े थोड़े में हम लोग अपना कार निकाल रहे हैं, बाइक निकाल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और पेट्रोलियम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या इस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं our future generation will get the same facilities? No, because it will get exhausted. So now it is the time to think about the alternative source of the energy, है ना. अब अगर हम alternative source of energy के बारे में नहीं सोचेंगे और वो alternative source of energy which is neither deplete the resource means the environment nor it will be existable, means your nuclear energy, your biomass, your atomic energy, wind energy, solar energy. These are the alternative way of energy which we should think that this about this alternative way of energy for our use, so that we will less depend upon the petroleum which is existable or non-renewable in nature. Okay, so this type of the energy should be used in future date. Now the thing is that if you will use more your resources, then what will happen? One line has given from that, the question is coming generally, the consequence of the environmental degradation do not respect the national or state boundaries. This issues is no longer region or nation specific. मतलब हम जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्स को वेदर इट इज़ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिप्लीट करेगा. ये एनवायरमेंटल डिप्लीशंस एक जगह पे कन्फाइंड होके नहीं रहेगा. अगर ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये लोग ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, मतलब इसका नहीं है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस यही लोग भुगतेंगे, बाकी कंट्री भी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतेंगे. और देखो जैसे हम लोग पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम उससे ज़मीन को बंजर कर रहा है इस पॉलीथीन. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, डोंट से नो टू द पॉलीबैग्स. इफ़ यू यूज़ दिस पॉलीबैग्स देन यू नो दैट दिस पॉलीबैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल and it will negatively hamper the fertility of the soil. Fine. So these polybags should be used less. In the same way, what I have told you here, sustainability of the development is comparatively a new area of the knowledge and it should be enhanced by all through encouraging the use of the alternative sources of energy. Fine. So this is all about your sustainable development. Now there are three questions which is related to your this topic, sustainable development. What is that? Find out the present source of energy used by the people in India. What could be the possibilities in 50 years from now? मतलब अभी कौन सा एनर्जी ज़्यादा इंडिया यूज़ कर रहा है, और आप लोग being the economic students after going through this chapter, what you expect in the next 50 years, what are the next alternative sources of energy? आजकल ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम और कोल, obviously सारा प्रोडक्शंस में. So the coal and petroleum products and electricity are the present sources of energy which is used more by the present level of the people in India. But petroleum products and coal products are non-renewable, so it should not be used again and again. It will adversely affect the environment. So in next 50 years, we are thinking the possibility of the next sources of energy are the radioactive element, solar energy, wind energy, nuclear energy, which are generally non-existable. Okay. Next question. Why is issue of sustainability is important for the development? So issue of sustainability क्यों डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? आपको अभी बताई थी कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे जिसमें नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होगा. दूसरी, हमारी जो रिसोर्सेस है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा.
ठीक है ना। सो पहले इसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसको डिफाइन करोगे. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इज द डेवलपमेंट व्हिच टेक्स केयर द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, शो ऑल्सो द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विदाउट डिप्लीटिंग द resources and without degrading the environment. This is the definition of your sustainable development. And this issue of sustainability is important. Why it is important? Because it preserves the resources for our future generation. It is save the our world from the different type of the natural disaster. It will save us from the different type of the disease which may arise due to the environmental degradation. Okay, so that's why the issue of sustainability is more important. Next one, the earth has enough resource to meet the need of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How this statement is relevant for the discussions of the development? इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब पहले समझो. ये बोला है कि अर्थ जब रिसोर्स बनाया वो इतना रिसोर्स दिया कि सबकी नीड्स फुलफिल हो जाए, लेकिन आउट ऑफ द ग्रीड अगर एक आदमी उस रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करेगा तो फिर तो ये एक आदमी की नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि आउट ऑफ ग्रीड, लोभ से वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो दूसरे के लिए कहाँ से अवेलेबल होगा, थोड़ी अवेलेबल होगा. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ये करेंगे, इंटरप्रेट करें. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर ओवर यूज्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. आपको पता है कि इन द नेम ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर, like coal, like petroleum. We are overusing it. In the same way, if you are using these resources, it may not be available for our future generation. But the countries like few developed country like US, China, they are out of, for the sake of the economic development, they are absorbing or extracting more and more of these non-renewable resources. As a result, this was not able to fulfill the greed of this country, and as a result, the resources which is sufficient to meet the needs of the all the people also, it is not possible to meet the greed of these countries. Fine. Next question is that list a few example of environmental degradations that you may have observed अराउंड यू. आपको क्या क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिल रहा है, आपको मैं बताई थी. लैंड डिग्रेडेशंस हो रही है, योर डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन लेयर्स, योर environmental pollutions, different arising of different type of disease. So the environmental pollutions, air pollutions, water pollutions, then your rising of the average temperature of the earth, what is that is called global warming. All these are the different type of the environmental degradations which you are noticing. So what type of the environmental degradations we are seeing? One is your deforestation, land degradations, ozone layer depletions, and your global warming. This type of the environmental degradations we are observing around us. So I hope I made it very clear to you. So our this chapter of development is already completed. My dear students, please you write down all the question answer which is given, and not only write down, already I have explained again and again. You see the video, and after that you read the question answer after noting down in your copy, so that you will be very thorough with this chapter. Thank you. Bye bye.